एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, मैं नहीं बना रही थी, तो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ वीडियो। और पिक्चर देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि वीडियो किस पे आधारित है। तो हाँ, मैं बता देती हूँ। ये वीडियो जो है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो है एक ड्राई फ्रूट्स है, और जिसे कि अखरोट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे वॉलनट बोला जाता है। तो वॉलनट के विषय में आज बात करते हैं। और वॉलनट के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी गई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अखरोट तो छोटा सा पर भीतर है राज बड़ा, तेरे संग है सेहत का अनमोल खजाना सचा। तू कठोर खोल में बंधा पर दिल से है कोमल, तेरी मिठास से भर जाता जीवन का हर पल। दिमाग की ताजा ताकत बढ़ाता है तू, तू तो ज्ञान का साथी। सर्दियों में गर्मी देता, जैसे तू है ममता की छाँव में। स्वाद में भी तू अद्वितीय है, भरपूर पोषक तत्वों से भरा। अखरोट तू धन्य है, सेहत का असली खजाना खरा। अब अखरोट पे बहुत ही प्यारी सी पोयम है, जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। पोयम इस प्रकार है। लिटिल वॉलनट, rough and round, in your shell, treasure are found. Crack your open, what a sight! Golden brain, a well-filled bite. Strength for body, food for mind, in your core, such wealth we find. Winter's warmth, you bring to all, with your power, big or small. Natural gift, you fill our soul, in each bite, you make us whole. Oh, walnut, precious and wise, a nut that nutrients we realize. अखरोट के ऊपर इतनी प्यारी सी पोयम और इतनी प्यारी सी कविता सुन करके बताइए कितना अच्छा लगा। अब ये जाना जा सकता है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है कितना हेल्दी होगा, और कितनी इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, कितने फायदे होंगे बॉडी के लिए। तो इसके विषय में अब बात करते हैं। अखरोट अखरोट क्या है, इसके विषय में समझते हैं कि अखरोट जो है, वॉलनट जिसे बोला जाता है, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, जिसे कि सूखा मेवा भी कहा जाता है, जो अखरोट के पेड़ से प्राप्त होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल जो नेम है इसका, जगलैंस है। अब इसकी जो अखरोट को उसकी जो बाहरी सतह होती है वो कड़ी होती है, और बाहरी खोल उसका बहुत कड़ा होता है, उसके कारण पहचाना जा सकता है। अब इसके अंदर जो नरम, मीठा और पोषक तत्वों से भरा अंदर क्या होता है, उसको गिरी बोला जाता है। अब आप सोच के देखो कि उच्च पोषक और औषधि गुणों से भरपूर ये वॉलनट अखरोट कैसा होगा। तो ये दो प्रकार के अखरोट होते हैं। जैसे कि एक अखरोट जो होता है वो आमतौर पर हम लोग देख सकते हैं, वो क्रीम कलर का, ब्राउन, ऊपर उसकी जो स्किन होती है वो क्रीम कलर की होती है, और अंदर से वो ब्राउन होता है। वो उसको इंग्लिश वॉलनट या अंग्रेजी अखरोट भी बोला जाता है। और एक दूसरा जो होता है वो ब्लैक वॉलनट होता है, जिसे काला अखरोट बोलते हैं। वो थोड़ा डार्क कलर में होता है। अब इसका स्वाद जो होता है थोड़ा सा तीखा होता है, वो ज़्यादा मीठा, वो मेल्ट वाला नहीं होता है स्वाद। दो तरीके के अखरोट मिलते हैं बाजार में, और लेकिन औषधि गुणों से भरपूर होता है अखरोट। अब ये ध्यान जब भी लिया जाए तो उसको ध्यान से देखा जा सकता है कि ये अखरोट कौन सी क्वालिटी का है। ये ब्लैक अखरोट है कि ये इंग्लिश अखरोट है। इंग्लिश मीन्स इट इज
अवेलेबल इन एवरीवेयर। अब इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए, इसके पोषक तत्व की बात करी जाए, तो अखरोट जो है पोषण से भरा हुआ होता है और इसके कई प्रकार के आवश्यकताएं तत्व मिले होते हैं, जैसे कि प्रोटीन। अखरोट जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों को मरम्मत करता है और उसके निर्माण में सहायता करता है। अब इसमें जो भरपूर फाइबर्स भी होते हैं, इसमें जो है उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतरीन करता है। विटामिन और मिनरल्स भी इसमें होते हैं, बताती हूँ। इसमें जो विटामिन होता है वो विटामिन ई होता है और B6 होता है, और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, फोलेट होता है, और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है इस वॉलनट में, इस अखरोट में। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करी जाए तो जो अखरोट है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने से के नुकसान से भी बचाता है। अब क्यों इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ अखरोट की, क्योंकि इसमें जो है ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड है। अखरोट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ये बेहतरीन स्रोत है जो कि दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है ओमेगा 3। अब अखरोट के स्वास्थ्य हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके, जैसे अखरोट खाने से स्वास्थ्य में क्या लाभ होता है, जैसे दिल की सेहत। जैसे अखरोट में जो ओमेगा 3 होता है वो फैटी एसिड होता है जो दिल को स्वस्थ रखता है और हृदय रोगों के जोखिम को से भी इसको बचाता है। अब मस्तिष्क स्वास्थ्य की बात करी जाए, जो अखरोट को मस्तिष्क के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो पोषक तत्व होता है वो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतरीन बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ओमेगा 3 होता है। अब इसके अखरोट खाने से क्या होता है, भूख कम लगती है और ये वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। अब इसके एंटीफ्लेक्स की बात करी जाए, इसमें पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो सूजन को भी कम करने में मदद करता है। हड्डियों को भी मजबूत करता है अखरोट, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम हड्डी को मजबूत बनाने के लिए सहायता करता है। अब इसके जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र के लिए क्या है, इसमें जो पाए जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं पाचन तंत्र को बेहतरीन बनाने में हेल्प करते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं ये अखरोट वॉलनट। अब इसका जो है कि अखरोट को क्या है कि इसको सीधा खाया जा सकता है, या सलाद दही मिठाई शेक स्मूदी या किसी में भी आप कट करके या ऐसे ही खाया जा सकता है अखरोट को। अखरोट का तेल भी व्यंजनों में उपयोग होता है, अखरोट से तेल भी निकाला जाता है जिसका व्यंजनों में भी उपयोग होता है, मिठाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अब अखरोट की सावधानी भी बता दें, हर चीज़ का मेरिट और डीमेरिट्स होता है, तो अखरोट की सावधानी भी बता देते हैं, डीमेरिट्स भी बता देते हैं। जो अखरोट का जो है अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, ये वजन को भी बढ़ा देता है, इसीलिए इसको संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। जब कुछ लोगों को अखरोट से एलर्जी भी हो जाती है, इसलिए अगर एलर्जी के लक्षण दिखते हैं तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है खाने की। अब जो अखरोट का जो क्या है स्टोरेज, इसकी स्टोरेज मात्रा क्या है, अखरोट को जो है ताज़ा रखने के लिए इसे ठंडे या सूखी जगह पर भी रखना चाहिए, इसके जो एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, अधिक समय तक ताज़ी हवा में नहीं रखना चाहिए। अब जो अखरोट है फ्रीज में स्टोर किया जा सकता है, इसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि यदि अखरोट को आप बाहर रख देते हैं कंटेनर्स में रख देते हैं और काफ़ी समय तक यदि भूल गए यदि नहीं खाया तो इसमें कीड़े लगने का भी खतरा रहता है और अखरोट खराब हो जाता है। अखरोट जो है मुख्यतः ठंडे और पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। भारत में जो है ये कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी खेती प्रमुख मात्रा में की जाती है। ये जो
पेड़ है 20 से 25 साल तक फल देता है अखरोट का पेड़। और इसे उगाने के लिए ठंडे जलवायु और अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है अखरोट के पेड़ को जहाँ ये उगते हैं ये ठंडे प्रदेश में उगाया जाता है। अब देखिए अखरोट में जो एक पोषक तत्व से भरा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक ड्राई फ्रूट्स है। और इसके नियमित सेवन से क्या है कि स्वास्थ्य में बहुत फायदा मिलता है और इसका संतुलित मात्रा में सेवन करना ही उपयुक्त होता है। A walnut is a type of dry fruit and harvested from the walnut tree and scientifically known as the juglans, and it has a hard outer shell and which enclosed a soft and edible inside. And the walnuts are highly valued for their rich and the nutrients profile and the health benefits. The distance means this brain, like its shape is like a brain, and the appearance of it's the hallmark of this nut, and often linked to its cognitive health benefits. Walnuts also come into two types. That there are means one is an English walnut, means this is a normal walnut, the most commonly consumed and the commonly available varieties in everywhere. And another is a black walnut, which is this variety has a stronger and more ideal flavor, and it is valued and for its medicinal properties it has. So it is not available everywhere. Now the nutrients value of the walnut is walnuts are packed with the essential nutrients and they contribute to overall health. And this is that means protein. So it is a rich source of protein, and basically it is protein and adding and additional in their muscles repairing and the growth also. It has a fiber so high in the dietary fibers can helping the improving digestion and the goods of the health. And it has a vitamins and a minerals also. So it contains a vitamin like a vitamin E, vitamin B6, and the minerals such as this magnesium and the phosphorus, copper, and the manganese also present in. And the antioxidants की बात कर ली जाए तो जो walnuts are also for their high antioxidants content and the broad and its body means against the oxidized stress. And it has omega means walnut has omega 3 fatty acid, and it is a unique feature of the walnut is there high level of the qualities which present into it that. And the plant-based omega is it has omega 3 fatty acid, and it is essential for heart and the brain health. And the health benefits of the walnut, that is the walnut has often this means a heart health problem. It has the omega 3 fatty acid and the antioxidant in the walnut to help reduce its influence and the power of cholesterol, lower power of cholesterol level, and promote the overall coronary vessels and the health, and the decreasing of the risk of heart disease also. Yes, brain's function is due to their resemble to the brain, and the rich omega 3 content walnut are the believed to the improve the cognitive functions and the protect that against age
are released and declined also. Weight, weight management is although higher in calorie well, and the walnut promote the helping to the control and appetites, and the support the wealth management also. Anti-inflammatory properties it has, that is a polyphenol. This walnut help to reduce to inflammation, so that which can lower the risk of the chronic disease like arthritis. And the bone, the health benefits it has, the presence of the calcium and the magnesium and the phosphorus in walnut help in the maintaining store and the healthy bones also. And they improve this digestion. High fiber content in walnuts aid in the smooth digestion and the prevent constipations also. And now that walnut can be enjoyed in the various ways, means raw, and they can be eaten raw as the healthy snacks, and the topping in the adding them in the salad and yogurts and oatmeal are the desserts, and the extra crunching and nutrients food which you are taking it. And the bake in other part also come into it, that is baking, means walnut are commonly used in the baked and the good like bread, cookies and the cake also. Its oil, walnut oil is used for its cooking, especially for the salad and the dressing, and the offer similarly health benefits also it has. And it is very precious also. Why? Because it has a protein controller, means walnuts are called calorie, and so it is important to eat them in the moderation of the avoid the excess calorie intake, and especially for those watching their weights. And its allergy, yeah, means some individuals have maybe in the allergy problem to that nut. Its nuts also maybe it's create allergy, so that symptoms can include in their skin reactions, and the digestive issue also come into it according to their digestion, and the several cases it has. And storage problem means walnut properly, that storage is essential for their maintaining that freeness of the walnut. It is they are prone of the means they are cool dry place. You store walnut is in the container in the cooler and dry place to extend their shelf life. And the refrigeration is keeping walnut in the refrigerator or freeze can further their freshness, and especially it you are storing them to the several months also. And the cultivating means walnut trees that the temporary climate. It has a sufficient climate. They are primary cultivating in their countries like China, in other countries like USA, Turkey, China, Iran, but in India, walnuts are grown mainly in the northern region, such as like the name which I am going to tell you. This is what are the names which where that walnut grows in India. This is Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand. These are the important places where the walnut grow. And the tree taken several years to mature, and the may and the can produce nuts to decay can once fully grown. And the walnut essentially beyond that, apart from this nutrients food sources, the walnut and their cell are the used in a
various non-food applications like that. Means the cosmetic means walnut oil is used in the skin care product for the moisturizing properties, and the polishing means crushed walnuts are used as the absorbing their industry polishing their any fine things. This and for the drying means the husk of the walnut can be used to create a natural drying for the fibers. And walnut can be the nutrients and offering the numerous things, health benefits and the ranging for the hearts and the brain and the help to improve digestion and the anti-inflammatory properties, including moderate amount of the walnut is your diet. You should care that and the greater enhance your overall. So well being that balancing is the key of everything, as they are higher in calories and the can casual allergy also, so we can use it in the proper ways. Don't use it more in amount. तो मैं आज बात करी थी आप लोगों से वॉलनट के विषय में, और इसे हिंदी में बोला जाता है अखरोट। अब अखरोट से मैच करता हो, यदि ध्यान से अखरोट को देखा जाए तो अखरोट का जो शेप होता है वो एक मस्तिष्क जैसा होता है। जी मस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। तो अखरोट का जो शेप होता है वो ब्रेन के जैसा होता है, इसलिए आज थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात हो जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? बात करूं मस्तिष्क और मन के विषय में। तो ये जो मस्तिष्क और मन के बीच का जो अंतर समझने के लिए दो प्रकार की प्रगतियां होती है, जैसे कार्य और उनके बीच में संबंधों को भी समझना होगा कि ये दो प्रकार के अंग होते हैं, एक दूसरे के साथ का उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग होते हैं। जैसे कि मस्तिष्क की बात करी जाए तो ये ब्रेन जो है बहुत, ये जो फिजिकल ऑर्गन्स है, इसकी जो आप शेप की बात करते हैं, जो वॉलनट आप देख रहे हैं, इसका शेप ब्रेन के जैसा होता है। तो मस्तिष्क भी एक ठोस भौतिक अंग है जो शरीर के अंदर खोपड़ी में स्थित होता है, और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी मुख्य अंग होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए, रचना की बात करी जाए तो क्या है, मस्तिष्क जो है इसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ग्लैसियर्स को एंड कोशिकाज इसके जो होते हैं सेल्स होते हैं अन्य तंत्रिकाओं से बने होते हैं, और इसमें जो विभिन्न जो हिस्से होते हैं जैसे सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम कार्टेक्स होता है, सेरिबेलम होता है, और मस्तिष्क स्टेम्स भी आते हैं इसमें। अब कार्य की इसकी बात कर दिया, इसके जो फंक्शंस कैसे होते हैं, मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य जो होता है शरीर में सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है, और ये जो निर्णय लेना और सूचना को संग्रहित करना, शरीर की गतिविधियों को संचालित करना और विभिन्न तंत्रिकाओं प्रतिक्रियाओं को संबंधित करने का भी इसको अधिकार होता है। अब इसके न्यू केमिकल प्रोसेस की बात करी जाए जो तो मस्तिष्क में जो है न्यू ट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स होते, फायरिंग होती है, जैसे इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो है रासायनिक और विद्युत संकेत हमारे विचारों में और समृद्धि और शारीरिक कार्यों को भी प्रोवाइड करते हैं मस्तिष्क, ये न्यूरॉन्स, इसके मस्तिष्क के अंदर के न्यूरॉन्स। अब इसके लक्षण की बात करी जाए तो मस्तिष्क एक जटिल कंप्यूटर की तरह काम करने वाला होता है जो पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और ये हमारे शरीर और मानसिक कार्यों का भी केंद्र होता है, सेंट्रल केंद्र होता है। अब बात किया मैंने मस्तिष्क का, अब मस्तिष्क का बात करने के बाद में एक पॉइंट
पॉइंट आता है मन क्या चीज़ है, माइंड क्या चीज़ है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बताती हूँ वो भी बताती हूँ। जो मन है एक अभूत है, मीन्स अभौतिक इकाई है। इसमें एक सीधा से देखना ही ना छुआ जा सकता है ना से देखा जा सकता है। ये जो है मस्तिष्क, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का परिणाम होता है, लेकिन इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। जो कि मस्तिष्क का भौतिक आकार होता है, ब्रेन का भौतिक आकार होता है, लेकिन जो मन होता है, माइंड होता है, उसका कोई भौतिक फिजिकल शेप नहीं होता है। तो चेतना की इसकी बात करी जाए तो कॉन्शियसनेस जो होता है इसमें मन में, तो मन हमारे सोचने की शक्ति, भावनाओं, धारणाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, स्रोत, इसके स्रोत माने जाते हैं। और ये वह जगह होती है जहाँ हमारी आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, और उनकी विचार प्रक्रियाओं को भी संचालित करता है। अब इसके विचार और भावनाओं की बात करी जाए, इसके थॉट्स एंड इमोशंस की बात करी जाए, तो मन वो जगह है जहाँ हम विचार करते हैं, कि निर्णय लेते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। अब भावनाओं के इसके जो अनुभव होते हैं, इसमें जो स्मृतियाँ होती हैं, इसका जो निर्माण और प्रयोग भी शामिल होता है। अब इसके जो लक्ष्य क्या होते हैं, मन हमारे अनुभव और मानसिक प्रतिक्रियाओं का समन्वय होता है, और ये हमारा आंतरिक संसार होता है, जहाँ हमारी भावनाएं, अविश्वास, धारणाएं और इच्छाएं निवास करती हैं। किसमें? मन में, और जिसे इंग्लिश में माइंड भी बोला जाता है। अब मस्तिष्क और मन के बीच का अंतर क्या है? बहुत ही स्लाइट अंतर है, इसे भी समझा जा सकता है। जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ये क्या है? भौतिक है। मीन्स इसका जो मस्तिष्क एक भौतिक अंग है, जिसमें हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। लेकिन जो मन जो है, जो माइंड है, वो अभौतिक है। मीन्स मन का अद्भुत आकार होता है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता। अब स्थान की बात करी जाए तो मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर खोपड़ी में स्थित होता है। लेकिन जो मन की बात करी जाए तो मन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये मस्तिष्क के कार्यों का परिणाम होता है मन। अब इसकी रचना की बात करी जाए तो इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लिसरीन होता है, कोशिकाएं होती है, इनकी तंत्रिकाएं होती हैं, इसकी रचनाएं में भी शामिल होता है। लेकिन जो मन की रचना की बात करें तो मन का कोई भौतिक रचना नहीं होती, ये जो विचारों, भावनाओं और धारणाओं से बनाया जाता है और बनता है। अब इसकी कार्य क्षमता की बात करी जाए तो मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता होती है, शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि शारीरिक संवेदनाओं, मूवमेंट्स और निर्णय को ये कंट्रोल करता है मस्तिष्क। अब मन की बात करी जाए, मन के कार्य की बात करी जाए तो मन जो है, मन सोच है, मन क्या है? भावना है। मन एक चेतना है के माध्यम से हमारे मानसिक और भावात्मिक अनुभव को नियंत्रित करता है मन। अब इसकी रासायनिक इसकी बात करिए तो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, संकेतात्मक जो माध्यम से काम किया जाता है। अब इसके जो विचारों की बात करी जाए तो मन विचारों से, धारणाओं से और भावनाओं से प्रोसेस करता है मन। अब मस्तिष्क और मन के बीच में संबंध क्या है, इसमें भी बात कर ली जाए। मस्तिष्क और मन का एक दूसरे से गहरा जुड़ाव होता है। मस्तिष्क की जो शारीरिक प्रक्रियाओं से मन की मानसिक और स्वभावात्मक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। अब जैसे कि जब मन में कोई न्यूरोकेमिकल बदलाव होता है तो ये हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। अब इसकी जो मस्तिष्क की चोट या बीमारी, जैसे अल्जाइमर की बात करी जाए, से जो है मस्तिष्क में जब चोट या बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, मन की जो प्रतिक्रिया होती है प्रभावित हो जाती है, जैसे कि स्मरण शक्ति का क्षय होना, सोच की
क्षमता में कमी आना और व्यवहारिक में भी परिवर्तन आ जाता है। इस मस्तिष्क में जब चोट लगती है तो मन की प्रतिक्रियाएं चेंज हो जाती हैं। अब इसका सारांश ये समझना चाहिए कि जो मस्तिष्क एक भौतिक अंग है जो हमारे शरीर और मानसिक कार्यों को संचालित करता है, जबकि जो मन है हमारी चेतना है, विचार है, भावनाएं का जो अद्भुत रूप है। और जो मस्तिष्क के बिना मन की गतिविधियां संचालित होना असंभव है। और मन के बिना मस्तिष्क सिर्फ एक शारीरिक अंग है। तो दोनों का बड़ा विशेष जुड़ाव है। मस्तिष्क के बिना मन की गतिविधियों को संचालित करना असंभव है, और जो मन के बिना मस्तिष्क सिर्फ एक शारीरिक अंग है। इसीलिए जो कहते हैं कि मस्तिष्क और मन दोनों ही आवश्यक होते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। मस्तिष्क शरीर की शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि जो मन है हमारी आंतरिक, मानसिक और भावात्मक संसार का प्रतिनिधित्व करता है मन। अब आज बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड माइंड? It is means they are the nature, function, and the relationship with each other. And although they are one often used in the interchangeable things, that it is a several ways. And we want talk about that. Means first we are going to talk about brain. It has a physical organ. Brain is a physical organ. The brain is a physical organ located inside the skull, and it is a part of the central nervous system, and can be observed, measured, and studied scientifically. And its structure, the brain is made up of neurons and the cells and the blood cells and the various specialized regions like the cerebrum, corten, and the cerebellum and the brain stems. अब सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है वॉलनट का शेप भी ब्रेन का शेप माना जाता है, क्योंकि ब्रेन भी ऐसे ही देखने में लगता है। तो इसके जो फंक्शन है, सो द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग ऑल बॉडीज फंक्शंस and including their sense organ, input, motor, controlling, and the automatic functions like heartbeat and the breathing. And it processes external this information that generate thoughts and the control movement and the regulates emotions as well. New chemical process we are going to talk about that. The brain open thoughts, new chemical reactions, and the electrical impulse also, and it communicates through the neurons and the homologs and the other significance mechanism. Its role is it acts as the control center of the body and regulating both virtual and invirtual action, such as that walking, talking, and the discussion, making, and the processing, and sensory informations. And now the mind comes. And then non-physical entirety means the mind is a contrast. Is the invisible means it is not a physical object and cannot be the directly seen or the touch. The mind is a byproduct of the brain and activity but exists in the resemble thoughts, feeling, and the consciousness. And the consoling this, the mind is the seed of that the consciousness, self-awareness, thoughts, emotions, and memories and imaginations also. And it is where the combinations that happen, where we think, dream, and make decision alone. Thoughts and emotions come into that
category means the mind is the center of the objective experiences that behavior system and ideas, desire, creativity, and the feelings like love and fear, happiness, and the anxiety also come into this category mind. And the roles, the mind help us that process internal experiences and they organize the is that reflect on the reality and the generalized that the personal meetings and it detail of that absorb the concept like identify that purpose of the self reflection also. The difference between the mind and the brain, that is that the brain is a physical entirety. The brain is the physical organ made up of neurons and other cells, and the mind is a in integrity. This cannot be measured, and it has no shape, and it is only absorbed directly. And the locations की बात करी जाए तो brain is located inside the skull and it is a part of neuron system, nervous system, and the mind is a no fixed location. The mind is has no physical location and it is a product of the brain activity. And the brain has structures composed of neurons and synapse chemical and distinct religious and the specialized functions the brain has. And what about mind? It has no structure. The mind consists of thoughts, emotions, and the persistence and the beliefs. Process की बात करी जाए तो it's open. The brain is that openly the thoughts and the neurochemical and the electrical signals to control bodies and the mental functions. And it's process that mind process what it is. The mind cannot be observed or the measured in the same way as the brain. It is objective. This control की बात करी जाए, the brain control means physical function that like the movement, brain control physical functions and the movement, breathing and the reflex actions also, and its process and its sensory data also who control the brain control. And and another point that is a mind. Yes, it is engaged in the cognitive functions like problem solving, emotional processing, and the imaginations. It comes into the mind category. And the relationship between the mind and the brain, it is an internal connection between us that the brain and the mind are deeply interconnected, and the brain's physical activity like the neurons firing and the chemicals changes and give rise of the mental process, thoughts, emotions, and consciousness. If the brain is damaged or the impaired, that the mental process can be dispute as well as. And the brain affect the mind. Changing in the brain chemical can alter that the mind functions. For the example, this is a chemical. This is a chemical imbalance in the brain can lead the depression, anxiety, and the cognitive impulse that affecting the thoughts and the feeling also. The mind influence the brain, yeah, it is. So mental activities such that thinking, learning, emotional responses, and can be the alter of the brain structure. For in praise means meditation and the mindfulness
and the practices have been shown to change brain activity and the structure over time to time. Example, we can give it that the brain functions that if someone touches a hot stove and the brain quickly process the pain signals and pull the hand back. This is the neurochemical and the physical process. And the mind functions that reflecting on the past experiences and the feeling rains and the happiness is the function of the mind, and this involve absorb the thoughts and the emotion processing. Conclusion, it is overall conclusion is that the brain is the physical machinery that the processes input and controls body's function, and while the mind is the subjective experiences of the thoughts, emotions and the consciousness that arise from the brain's activity. And the brain can be studied significance that thoughts, neurologists and the medical imaginations. This means that but the mind detailed with the personal experiences and the introspections and the self-awareness and which belong to be their resemble of the psychologist and the physiologist. And thus they are, while the brain and minds are closely related, they are not the same. The brain is the physical substance and the mind is the abstract result of its function. But the brain and minds are both have a connection. तो आज मैंने बात किया अखरोट, अखरोट जिसे इंग्लिश में वॉलनट्स बोलते हैं और हिंदी में अखरोट बोलते हैं। अखरोट के विषय में बात करते करते वॉलनट में आ गए और वॉलनट से बात करते करते इसका शेप देखते देखते ब्रेन और माइंड में आ गए। तो आज बात एक ही चीज़ की नहीं हुई, एक से रिलेटेड दो चीज़ की बात हो गई, वॉलनट की, अखरोट की। वॉलनट इंग्लिश में, हिंदी में अखरोट की, और हिंदी में मस्तिष्क और मन की, इंग्लिश में ब्रेन एंड माइंड की। तो आज इतनी सारी बातें हो गई। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो खुश हो जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे नए वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।